Hello friends, I am Kedar Shelar and my colleague Mitesh Bhatt. We welcome you all in this new topic, new video, Lean Construction. दोस्तों, मैं केदार शेलार और मेरे कलीग मितेश भट्ट इस वीडियो में हम आज सबका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है लीन कंस्ट्रक्शन। वेलकम। So let's start with the introduction part. What is lean construction? Lean construction is a way to design production systems to minimize waste of materials, time, and effort in order to generate the maximum possible amount of value. मतलब lean construction है, इट इज़ द वे टू डिज़ाइन प्रोडक्शन सिस्टम। जो हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उसमें जो मटेरियल वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, एफर्ट वेस्ट है, वो कम करके उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क हम प्रोड्यूस करेंगे। लीन कंस्ट्रक्शन एंश्योर्स अ प्रोजेक्ट इज completed rapidly and lower construction expenses are incurred. Lean construction जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में, वो फास्टर है और जो प्राइस है उस प्रोजेक्ट की, नहीं तो जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, वो ऑप्टिमम कॉस्ट में हम प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। Lean construction also aims to minimize the cost of the maintenance, layout, planning, and activation project during construction. Lean construction से हम जो expenses होते हैं, expenses जो है किसके लिए, तो maintenance के, layout के, planning के, execution of the project के, ये हम कम कर सकते हैं। So let's jump to the revolution of the lean construction history. Revolution of lean technique has been in use since centuries. Lean techniques are used in warships, production of cars and aircrafts during the talk time. First use of lean in construction was done by Lori Koskela. दोस्तों, ये जो लीन कंस्ट्रक्शन, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सेंचुरीज से यूज़ की जा रही है, बहुत सारे सेंचुरीज से। हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये लीन कंस्ट्रक्शन, ये लीन टेक्निक है, वो शिप्स के, वॉरशिप्स जो होते थे और एयरक्राफ्ट जो होते थे, उसके कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते थे। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कॉन्सेप्ट लीन टेक्निक जो है, वो सबसे पहले लॉरी कॉस्केला, ये जो सर है, उन्होंने यूज़ किए थे। तो हम आगे देखेंगे कि लीन कंस्ट्रक्शन का जन्म कैसे हुआ। Lean construction, the history, it is started in the Arsenal city in Venice in 1450. In the 14th century, this lean technique was used. Initially, lean thinking in Arsenal, Venice in 1450 for making warships, manufactured ship parts at different location and assemble part at main factory. Because of standardization, quality of the work were maintained. तो दोस्तों, आर्सेनल में 1450 में ये लीन का जन्म हुआ, जहाँ उनका ये ऐसा थिंकिंग था कि जो वॉरशिप्स बनाई जाती थी, तो उस वॉरशिप्स के जो पार्ट्स हैं
वो अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर होते थे और वो एक जगह पे लाके असेंबल करके वो प्रोडक्ट अपना फाइनल करते थे, जो शिप वो बनाते थे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते थे और बाद में हम जो एक जगह पे असेंबल करते जो मेन फैक्ट्री में, उसके वजह से पार्ट्स और प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और काम का क्वालिटी मेंटेन हुआ। देन हेनरी फोर्ड in 1914. Henry Ford 1940 for production of Ford car. Ford company used continuous flow system of for mass production of Ford cars. They have done huge profitable business for 19 years, but because of not flexibility in design, their business has faced tremendous losses. 1914 में हेनरी फोर्ड ने लीन टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो मॉडिफाइड था पहले टेक्निक से। यहाँ हेनरी फोर्ड ने जो यूज़ की ये टेक्निक, वो कार बनाने के लिए यूज़ की। उनका जो मोटिव था वो ऐसा था कि वो मास प्रोडक्शन करते थे और कंटिन्यूस फ्लो में। तो यहाँ उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाद में फेस करने पड़े फोर्ड कंपनी को। सो नेक्स्ट इज जर्मनी। इन जर्मनी 1930 Germany aircraft use talk time concept to manufacture the aircraft. Talk time can be said as required production time by customer demand. 1930 में जर्मनी ने थोड़ा एडवांस टेक्निक यूज किया। टॉक टाइम जो है वो एक लीन, वन ऑफ द लीन टेक्निक है, जो आगे हम देखेंगे। देयर आर 30 डिफरेंट लीन टेक्निक्स, तो इट इज़ वन ऑफ देम। तो टॉक टाइम में क्या हुआ, तो टॉक टाइम जो है वो ऐसा है कि रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड। मतलब जितना प्रोडक्शन करना है वो कस्टमर डिमांड के हिसाब से करना है। इस हिसाब से वो लीन टेक्निक हम आगे चला गया, थोड़ा सा डेवलप हो गया। देन टोयोटा in 1950. Toyota subsequently combined the ideas of talk time with Ford's idea on continuous flow in the 1950s. They implemented critical dimension of flexibility in very short lead time for high quality project. 1950 में टोयोटा ने ये सब जो लीन जो टेक्निक्स यूज़ किए थे, जो कंटिन्यूस डेवलप हो रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जो टेक्निक हेनरी फोर्ड ने यूज़ किया और जो टेक्निक जर्मनी ने यूज़ किया, वो उन्होंने कोलैबोरेट किया। तो इसके वजह से जो टोयोटा को रिजल्ट्स मिले वो ऐसे थे कि उन्होंने मास प्रोडक्शन किया, उसके साथ साथ टॉक टाइम, मतलब कस्टमर डिमांड के साथ वो उन्होंने कंबाइन किया। तो मास प्रोडक्शन में उनका कंटिन्यूस फ्लो भी हो रहा था और टोयोटा का जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन चेंज प्रूफ भी था। मतलब अगर कस्टमर ने अलग डिज़ाइन डिमांड किया तो टोयोटा ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया तो कस्टमर के हिसाब से कंटिन्यूस फ्लो में प्रोडक्शन करे। तो ये बहुत सक्सेसफुल था। So before this, basically these lean techniques were used in manufacturing industry, but Sir Laurie Koskela was first to use this lean concept in the construction industry. He implemented this technique in construction industry. He's the first person. He produced
triplet perspective of TVF. TVF is transformation, flow, and value generation in the construction industry. So let's discuss this ahead. So principles of lean construction. There are 11 principles of lean. So first is reduce proportion of non-value adding activities. So reduce proportion of non-value adding activities. So first let's discuss what are value adding activities. The value adding activities are that which convert the product or the data in the quest to fulfill the demand of the customer. जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है वो एक हाई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं कस्टमर डिमांड के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी होगा, इन टर्म्स ऑफ टाइम होगा, इन शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन जो हमने पहले जिसके बारे में डिस्कस किया था, in terms of time, cost, efforts, etc. etc. And another one is non-value adding activities, that is waste. Those activities which consume time, resources, space, but that do not bring the productive value are the non-value adding activities. जो activities value add नहीं करते, मतलब हम लीन टेक्निक में जिस एक्टिविटीज को हम वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, रिसोर्स, स्पेस, तो वो हम निगलेक्ट करेंगे इन फर्स्ट प्रिंसिपल. सो रिड्यूस proportion of non-value adding activities. Then meeting clients requirement. Meeting clients requirement, this is mostly deals with the scope of the work. The proper documentation should be there in order to reduce fluctuation of the scope in the future. तो दोस्तों मीटिंग क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट मतलब जो अपना ये स्कोप ऑफ वर्क के रिगार्डिंग टर्म है. यहाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे वो कम होंगे और जो अपना जो सिस्टम होगा वो चेंज प्रूफ होगा. देन लोअर वेरिएबिलिटी इन वर्क. वही हमने अभी जो डिस्कस किया कि लेस चेंज इन द स्कोप. आगे जो स्कोप चेंज हो गया तो इट विल have negative impact on the project. It may lead to the delay and overrun of the cost. So it helps to control this change. Third principle. Fourth principle is reduce process cycle time. There are two methods, push method and pull method. We use pull method of scheduling. We will discuss this in the next slide. The fifth principle is reduce amount of step, components and connections between the activities. मतलब दोस्तों एक्टिविटीज के बीच में जो इंटरलिंकिंग है हम वो कम करते हैं, और वो कम होता है इसके वजह से उसकी डिपेंडेंसी कम होती है, और डिपेंडेंसी कम होगी तो हम ये बहुत इजीली काम कर सकते हैं. दिस इज द फिफ्थ प्रिंसिपल. सिक्स्थ प्रिंसिपल, improve the flexibility of the production. जैसे कि डिपेंडेंसी कम होगी एक्टिविटीज में तो अपने शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा. Seventh is improve the transparency of the process.
ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों प्रोजेक्ट में एक ट्रांसपेरेंसी रहती है लीन टेक्निक्स में, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रिंसिपल 8 इज कॉन्सेंट्रेट कंट्रोल ऑन द एंटायर प्रोसेस। 8th प्रिंसिपल बताता है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होता है लीन टेक्निक में। ये पूरा प्रोसेस बेस्ड रहता है। जो लीन टेक्निक है वो प्रोसेस को कंट्रोल करता है और वो प्रोसेस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल 9 इज इम्प्रूवमेंट इन ऑनगोइंग प्रोसेस। जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है। वी लर्न फ्रॉम द पास्ट। हम जो पास्ट के रिकॉर्ड्स है उससे सीखते हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करके आगे चलते हैं। तो ये 9th प्रिंसिपल है। देन इम्प्रूव्ड बैलेंस फ्लो, मतलब बैलेंस्ड वर्क जो है हम लीन टेक्निक यूज करके फिनिश करते हैं। जो बैलेंस्ड वर्क रहता है वो और अच्छे तरीके से हम काम फिनिश करेंगे, ये प्रिंसिपल 10 बताता है। देन प्रिंसिपल 11 सेट द बेंचमार्क। एक हम बेंचमार्क सेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। let's take an example. We give quality assurance plan and we complete the project as per the assurance. So this is the benchmark. We set the benchmark. और जो भी चेंज होगा, जो भी क्वालिटी में चेंज होगा, वो सबको पता रहता है, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट और साइट एग्जीक्यूशन टीम, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट में चल रहा है। So these are 11 principles. Let's talk about tools. There are 30 lean construction tools. We will discuss their names, which are the 30 tools. First is last planner system. हम लास्ट प्लानर सिस्टम इस वीडियो में सीखेंगे। सेकेंड इज मीटिंग ऑफ डेली हर्डल्स, फर्स्ट रन स्टडीज, फेल सेफ फॉर क्वालिटी, कानबान, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कंट्रोल ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, परेटो एनालिसिस, कंटिन्यूअस फ्लो, failure mode and effect analysis, Kaizen, 5 whys, root cause analysis, line balancing, first in first out, concurrent engineering, 5S, visual management, construction process analysis, just in time, value stream mapping, work structuring, total work management, Poka-Yoka, that is error proofing, 6 Sigma, bottleneck analysis, PDCA, Buddha walk, check sheet and automation. These are 30 lean techniques. Now we are going to discuss the first one, that is last planner system, LPS. Last planner is a system for collaboratively managing the network of relationship and conversations required for project coordination, production planning, and project delivery by promoting conversations between trade foreman and site management at appropriate levels of details before issues
become critical। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है। शॉर्ट में अगर इसको बताया जाए तो बेसिकली लास्ट प्लानर जो है वो कोलैबोरेटिव सिस्टम है with good coordination, good planning, good with a good coordination, good planning and project delivery। इसमें सब लेवल के लोग है जो इन्वॉल्व है, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम मैनेजमेंट, दैट इज और execution team। So as per definition, there are three divisions who work on this last planner system. First is steering committee. It involves general manager, assistant general manager, that is top management. Then site level management includes project manager, site engineers, and this is the execution teams and the foremen। So दोस्तों लास्ट प्लानर सिस्टम में तीन डिविजन्स है और तीन मैनेजमेंट है जो काम करते हैं। फर्स्ट जो है वो स्टीयरिंग कमेटी रहती है, वो इसमें जनरल मैनेजर जो टॉप मैनेजमेंट है, जो एचओ में बैठकर जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं टॉप मैनेजमेंट, वो स्टीयरिंग कमेटी है। उसके बाद जो दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर एंड साइट इंजीनियर्स, जो साइट लेवल मैनेजमेंट टीम है, मिडिल मैनेजमेंट। और लास्ट है एग्जीक्यूशन टीम। इस तरीके से लास्ट प्लानर सिस्टम काम करती है। So we will discuss these four parts of last planner system. Let's start from the committees. System can be implemented by forming two teams, steering committee and LPS team. The first one is the steering committee. We will discuss the members of the steering committee. It includes management director, general manager, assistant general manager, engineering head, functional head, lean consultant and labor community head. And the another team, that is LPS, that is lean last planner system team, which is site team. It includes project manager, senior site managers, junior site managers, safety engineers, junior planning engineers, quality engineer, contractors engineer, storekeepers, engineer from different agencies, on-site labor head, machine operators। तो दोस्तों सिस्टम जो LPS सिस्टम है वो दो टीम में बटी हुई है। द फर्स्ट टीम, पहली टीम जो है वो है स्टीयरिंग कमेटी और दूसरी जो टीम है वो है LPS टीम। हम साइड टीम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि जो दो टीम है उसमें कौन से मेंबर्स आते हैं। तो स्टीयरिंग कमेटी में हमने अभी जो डिस्कस किया वो ये मेंबर है, और जो लास्ट प्लानर सिस्टम टीम जो साइड टीम है उसमें ये सब मेंबर काम करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम है। हाँ, and this is a very important, establish partnership between the stakeholders and supplier। जो लीन लास्ट प्लानर सिस्टम है वो एक पार्टनरशिप प्रोड्यूस करता है बिटवीन जो भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स है और द सप्लायर्स। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
In the steering committee, the roles and responsibilities are as follows: establish and follow a mutually agreed vision, mission, and scope of work. Form an execution team and communication system for better productivity of project. Provide inputs for project development. Identify the priorities for project progress. Monitoring risk and timelines. Ensure the quality work by forming company standards. Establish the project milestone and review the project progress. Help LPS team to solve the conflict like resource availability and other departmental issues. Ensure the work done is as per strategic goal and objective of company. And last, ensure the smooth and continuous flow of funding to complete the project on time. So these are the roles and responsibilities of steering committee. Now we will discuss roles and responsibilities of last planner system or site team. Complete the daily planned work. Follow the company standards to do work. Ensure availability of all safety tools on site. Safety is very important. Ensure the quality of work so rework can be avoided. Quality. Note the daily progress work and make strategy for next day work. Update the daily progress report to higher authorities with unsolved constraints and upcoming constraints by referring 6-week look ahead plan. Update the master schedule each month as per progress of project and redevelop the project milestones, dates and activities completion cycle. So these are roles and responsibilities of site team in last planner system. Let's go ahead. Organizational structure. What does committee do? The steering committee. We are talking about the teamwork. Okay. So the steering committee gather and do audits at site once in a week. Yeah. Then visualize progress status of the project by site inspection or site walk by the steering committee members. Then insist the discipline and standards of work completion. Then solve the site problems with use of constraint management sheet data and discussion with LPS team in audit. इसमें जो एक कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट शीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे. हम वो कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट शीट लेकर जो प्रॉब्लम्स है वो एलपीएस टीम के साथ डिस्कस करते हैं, उसमें से बेस्ट आउटपुट निकालते हैं और वो सॉल्यूशन हम फ्यूचर में भी यूज करते हैं इन केस ऑफ सेम प्रॉब्लम अकर्स. देन मेक सॉल्विंग प्लान फॉर अपकमिंग कंस्ट्रेंट्स. जो आगे जो कंस्ट्रेंट आने वाले हैं उसके लिए पहले ही हम प्लान रेडी करते हैं इन स्टीयरिंग कमिटी. अप्लाई द लीन पैराडाइम्स for site activities. Then provide acknowledgement and support to LPS team.
ensure the completion of all legal formalities. This is what steering committee do. Now, the teamwork for the site team, that is lean planner system team, perform the Gemba meeting at site. Gemba is a meeting. It is carried out in the morning before starting of the work and after completion of the work, after working hours. It is just a 10 minutes meeting. We discuss all the points regarding the progress, what happened, what to be done on the very next step, and what are the strategies. Second is update the daily fest constraints and their opening status, active or inactive, in constraint management sheet. Then measure the daily PPC and try to finish non-complete completed work in current week only. Then arrange the fortnight meeting and submit the detailed report to steering committee. Identify the critical path of the project, arrange all required resources, and complete those activities on time. Identify the non-value adding activities, remove it or perform them later, and update the changes in 6 week look ahead plan. So these are this is the work of site execution team. Now we'll discuss the types of schedules. There are two aims of LPS: to prepare job for immediate employees through ongoing learning and corrective measures, and workflow to achieve estimated cost time output. These are the two main aims of last planner system. So types of schedule: master schedule, sorry. So before making any schedule, we need to consider these conditions. So in order to make the correct schedule, the first one, we need to know circumstances of the project, of the site, everything. Then the design and management of construction. Then components and equipments we have, workforce we have, then machinery and equipments we have will be required, working conditions including space, connecting works, interlinked work, climate, and safety. So in LPS, in last planner system, these are the conditions to be considered while making any schedule. So now let's talk about the schedule. How many types of schedule we are going to execute in our project. The first is master schedule. We set milestones and key date. This master schedule will give us phase schedule. We get phase-wise schedule where the milestones are divided into different schedules. This phase schedule will give this 6 weeks look ahead plan, the schedule for 6 weeks. Then this schedule will give you a weekly work plan, the weekly schedule, and this weekly schedule will give us the daily work output. So from the master schedule we are from the master schedule
we got these schedules, and this is how the micro planning is done in LPS. The comparison of traditional method and the last planner system. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन. जब सबसे पहला है जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है, इसमें ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें वी हैव टू वेट फॉर हायर मैनेजमेंट ऑथोरिटीज सिग्नेचर फॉर अप्रूवल्स. जो भी मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है, उसके जब तक सिग्नेचर नहीं होते अप्रूवल्स पे, तब तक हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते. बट इन लास्ट प्लानर सिस्टम, द प्रोजेक्ट मैनेजर PM हैज authority when higher management is not there, so work is smooth. लास्ट प्लानर सिस्टम में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो साइट पर काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ऐसी अथॉरिटी है कि जब हायर मैनेजमेंट नहीं होगा तो on the behalf of higher management he will sign the work. तो रिसर्चर का जो मानना है, जो ऑब्जर्वेशन है फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन फंक्शनैलिटी, लास्ट प्लानर सिस्टम improvement for top management is high, so any approval time will be fast based on the constraint management sheet. लास्ट प्लानर सिस्टम में जो हम कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट शीट है वो क्लियर करते हैं वीकली. जैसे PM के पास जो अथॉरिटीज है वो उसके वजह से यहाँ टाइम लॉस कम होता है और कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है क्योंकि ये सब साइट लेवल पे होता है. देन रिकॉर्ड कीपिंग. ट्रेडिशनल मेथड में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता. लास्ट प्लानर में इट इज़ वेल मेंटेन्ड, सब कुछ मेंटेन किया जाता है लास्ट प्लानर में. शेड्यूल. इन ट्रेडिशनल मेथड वी यूज पुश मेथड. वी फोकस ओनली ऑन स्टार्ट एंड फिनिश dates of the activities. But in last planner system we use pull method. We focused on every possible aspect and make a project schedule with respect to its end date. So what is researchers critical observation is the last planning system detailed project scheduling enables 6 weeks look ahead plan targeted work and hence possible to know all upcoming constraints. जो ट्रेडिशनल मेथड है जो उसमें हम स्टार्ट डेट और एंड डेट इन दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक्टिविटी के. बट लास्ट प्लानर सिस्टम में हम पुल मेथड यूज करते हैं. जो पुल मेथड जो है वो पुल मेथड जो है उसमें वी फोकस ऑन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट. जो भी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स रहते हैं वो यूटिलाइज करते हैं और हम प्रोजेक्ट के एंड डेट पर फोकस करते हैं और एंड डेट के हिसाब से हम पूरा प्रोजेक्ट खींचते हैं. देन स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट. ट्रेडिशनल मेथड में हम स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते इन टर्म्स ऑफ इन रन टाइम. बट लास्ट प्लानर सिस्टम में इंटरेस्ट अलाइंड होता है क्योंकि रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ऑडिट वंस इन अ वीक होता है साइट पर, तो उस ऑडिट के हिसाब से उस ऑडिट में जो फोकसेस है, जो स्टेक होल्डर के जो व्यूज है वो डिस्कस किए जाते हैं. इन टीम वर्क मतलब ट्रेडिशनल मेथड it is functional, but in last planner system it is cross functional. It means every morning Gemba meeting clears the targeted goal.
ट्रेडिशनल मेथड में जो मीटिंग्स होती है वो वीकली रहती है, कभी कभी डेली रहती है, बट लास्ट प्लानर सिस्टम में वीकली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती ही है, बट ये जो गेम्बा मीटिंग है जो मॉर्निंग और इवनिंग में होती है, उसकी वजह से काम में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, और जो भी अपने टारगेटेड गोल से हम डिस्कस करके वो कंप्लीट करते हैं फास्टर। देन कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल मेथड में इतना इफेक्टिव नहीं है, पर लास्ट प्लानर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वाई? इन लास्ट प्लानर सिस्टम contractors are aware of their roles and responsibilities, which is highly effective for project progress. Next, based on these functionalities aspects, limitation of traditional construction method can be identified as lack of top management involvement, huge process waste, lack of material planning and delayed delivery. Most negative effect of traditional construction method on project is time overrun and cost overrun. जो ट्रेडिशनल मेथड है, अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें से ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वहाँ टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, उसके वजह से प्रोसेस वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है in terms of cost, time, money, efforts, everything, and lack of material planning and delayed delivery. जो material planning है वो अच्छे से नहीं होता और इसके वजह से डिलीवरी में डिले होता है. The last point of for this comparison is the most negative effect जो हमने अभी जो डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल मेथड में कॉस्ट ओवररन होता है, उसके साथ साथ टाइम ओवररन भी होता है. So in material planning we have this traditional method where we first in terms of ordering any material we need to have this material requisition slip, that is from project manager or site engineer. Then this request goes to purchase department. This purchase department check the costing, then POs are prepared, then the POs are compared, they give approval, and then the material comes to the site, that is good receipt note. It comes to the store at the site. But in last planner system we have this. PM has authority. PM के पास जो अथॉरिटी है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप की, वो डायरेक्ट हम सप्लायर से बात कर सकते हैं एज पर आवर नीड. बट उस नीड के लिए भी एक कंस्टेंट है इन लास्ट प्लानर सिस्टम, वो ये है कि हम जो लीड जो एक बेसिक जो फंडा है कि साइट पर 25% सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए. कोई भी एक्टिविटी हो उसके लिए जो मटेरियल हो उसके 25% स्टॉक स्टोर में होना चाहिए. ये मिनिमम स्टॉक है, तो इसके वजह से डिले नहीं होता. तो हम जब ऑर्डर करते हैं मटेरियल इन LPS सिस्टम, तो उसके लिए हम ये लीड टाइम प्लस दिस 25% स्टॉक ऐड करके, ये चेक करके हम मटेरियल ऑर्डर करते हैं. तो मटेरियल का कभी शॉर्टेज नहीं होता और मटेरियल का मॉनिटरिंग होता है और मटेरियल टाइम पर साइट पर पहुंचता है. देन कंस्ट्रेंट रिजोल्यूशन शीट. तो यह है कंस्ट्रेंट रिजोल्यूशन शीट. जो कंस्ट्रेंट्स है, जो प्रॉब्लम्स है साइट के ऊपर, जो 7 दिन के प्रॉब्लम हम
शीट में लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कंस्ट्रेंट हेड, कहाँ से ये प्रॉब्लम है ये लिखा है, उसमें करेक्टिव एक्शन कौन लेगा, मतलब ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, उसके वो अथॉरिटी हु, किसके वजह से हुआ, व्हेन, कब होना चाहिए, ओपन डेट एंड क्लोज डेट, कब ओपन हुआ और कब क्लोज हुआ। तो ये है अपना कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट शीट, सॉरी कंस्ट्रेंट रिजोल्यूशन शीट, जहाँ हम जो भी कंस्ट्रेंट है वो लिखते हैं, और जो जितने भी कंस्ट्रेंट हो वो 7 दिन के अंदर पूरे ख़त्म ही करते हैं। अगर नहीं हुआ वो क्रिटिकल होता है, और वो क्रिटिकल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट में कंप्लीट करते हैं। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट, जहाँ हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, जो कंस्ट्रेंट सॉल्व नहीं होते मोर देन 7 days 15 days, देन इट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन प्रॉब्लम रिजॉल्विंग शीट। तो ये है प्रॉब्लम रिजॉल्विंग शीट। So these are two sheets which are very important in last planner system. The last is process waste. There are many types of process waste. Let's discuss one by one. This is the last part we are going to discuss in this last planner system. So दोस्तों, बहुत सारे वेस्ट होते हैं प्रोजेक्ट में, तो वो कौन से होते हैं हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज डिलेज, द आइडियल टाइम ऑफ स्टाफ waiting for workfront completion of previous activity, clarification in drawings, plans, instructions, approvals, appropriate place to work in is not available. दोस्तों, ये डिलेज जो है, इसमें जो आइडियल टाइम पर स्टाफ, मतलब कभी कभी वर्क फ्रंट नहीं होता, कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती ड्राइंग की, कभी कभी जो आगे पहले का जो काम रहता है विच इज़ इंटरलिंक, वो कंप्लीट नहीं होता, उसके वजह से डिले होता है। देन गलत इंस्ट्रक्शंस के वजह से, नहीं तो अप्रोप्रिएट प्लेस, मतलब जो काम करने की जगह है वो अवेलेबल नहीं होती, तो इसके वजह से डिले होते हैं। So we have discussed one of the 8 process waste. The second is defect and rework. Product requiring inspection, refurbishing, defects due to poor quality. जो defects होते हैं, reworks होते हैं, ये one of the process waste है, जिसके वजह से प्रोजेक्ट के ऊपर गलत असर पड़ता है in terms of time, cost, money, efforts, everything. Inventory, unnecessary inventory causing space, cost, working conditions, damaged, poor quality material. जो unnecessary inventory है, जो unnecessary material जो ऑर्डर किया जाता है उसके, वो एक स्पेस लेता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है उसके वजह से। वर्किंग कंडीशंस चेंज होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा तो जो चाहिए उसके लिए जगह कम पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मटेरियल जिस क्वालिटी का चाहिए वो डैमेज होता है, नहीं तो वो पुअर क्वालिटी का। सो दिस इज प्रोसेस वेस्ट। सो देन मोशन, unnecessary movement of workers, searching for people, co-workers, engineers, hands tool, drawings, etc. मतलब अगर कुछ अलाइन नहीं रहेगा साइट के ऊपर, तो अननेसेसरी मूवमेंट होती है कि ड्राइंग नहीं है, वर्कर नहीं है, वर्कर दूसरी जगह पे काम कर रहा है, इधर वर्क फ्रंट नहीं मिल रहा है, नहीं तो टूल्स नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ये सब प्रोसेस वेस्ट है जो मोशन के अंडर हम कवर करते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, डबल और एक्सेस मटेरियल मूवमेंट, अननेसेसरी शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स। ये जो अननेसेसरी शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स है जिसकी वजह से टाइम लॉस होता है,
लेबर लॉस होता है, लेबर आई मीन द कॉस्ट ऑफ द लेबर, वो लॉस होता है। So, बहुत सारे लॉसेस है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अननेसेसरी मटेरियल की मूवमेंट होती है साइड पर, तो ये नहीं होना चाहिए, ये वेस्ट है, ये प्रोसेस वेस्ट है। देन ओवर प्रोसेसिंग, एक्सेसिव सुपरविजन, frequent design changes, under qualified deployment of equipments, processes leading to rework and defects। ये प्रोसेसिंग जो होता है, ओवर प्रोसेसिंग जो है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सुपरविजन होता है, इसमें डिज़ाइन चेंज होते हैं बहुत सारे। देन ओवर अंडर क्वालिफाइड डेवलपर, जो अपने इनकम्पिटेंट जो लोग होते हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं, उसके वजह से ये रिवर्क होता है, डिफेक्ट होता है, ओवर प्रोसेसिंग होता है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, ये प्रोसेस वेस्ट है। देन ओवर प्रोडक्शन, इनकम्प्लीट वर्क, नॉट यूजफुल टू कस्टमर्स, ऑर्डरिंग टू सून, ऑर्डरिंग मच मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर प्रोडक्शन मतलब इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड, ओवर प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, तो ये प्रोसेस वेस्ट है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर्स एक्सेट्रा। जो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, जो डिज़ाइनर्स, जो वर्कर्स जो काम करते हैं, उनको उनकी कैपेबिलिटी 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते, पर एलपीएस सिस्टम में सब कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, तो उसकी वजह से वो कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। पर जब ये कैपेबिलिटी यूटिलाइज नहीं होती तो ये प्रोसेस वेस्ट है, वो यूटिलाइज होना चाहिए। So these are the process waste. We have discussed about last planner system and the lean techniques in this video. Yes, thank you for watching this video. Thank you.